Avianca Flight 52 is in trouble. क्रू जो है वो थक चुका है and they are almost out of fuel और वो उड़ रहे हैं न्यूयॉर्क के ऊपर. Are we cleared to land now? Yes, sir, we are clear to land. Tell me things louder because I'm not hearing it. उनको लैंड करने की क्लियरेंस मिल जाती है and soon their nightmare would be over. Gear down. Glide slow! Isn't grade 500 feet? जो कैप्टन है he is desperately searching to find the runway at the John F. Kennedy Airport. Lights! लेकिन उनको रनवे नहीं दिखाई दे रहा है, मिल नहीं रहा है. Don't see it. I don't see it. अब वो एक वायलेंट विंड शेयर से भी लड़ाई कर रहे हैं. This is the wind shear. और वो क्रैश हो जाएंगे. Landing gear up! Landing gear up! उस प्लेन में एक बूंद फ्यूल भी बचा नहीं है और वो लैंड नहीं कर पाएंगे. जल्दी ही फ्लाइट 52 is going to crash somewhere over New York. और जितने भी एयर क्रैश एक्सपर्ट्स होंगे वो ये कभी भी पता नहीं लगा पाएंगे कि ये कैसे हुआ और जो है किसको ब्लेम किया जाए. Relevance of testimony. Southwest of Kennedy Airport, with a track brought up. What's the elevation? 106 to Main Street, north to Bay. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट भामरी, लेकर के आया हूं एक नया एपिसोड आपके फेवरेट शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स का. ये शो जिसमें हम चर्चा करते हैं इस धरती पे घटित अलग अलग समय में अलग अलग दुर्घटनाएं डिजास्टर्स की. और ये शो आता है आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो कि है A Flight of Life. और आज के शो में दोस्तों हम चर्चा करेंगे 25 जनवरी 1990 की एक घटना, द क्रैश ऑफ द एवियंका फ्लाइट 52. 25 जनवरी 1990. जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं, they are nervously tracking a low pressure system which is approaching the northeast coast of America. There was a system moving through the Great Lakes, moving east. There was a couple other systems converging. And a lot of times they'll converge in the New York area there, and the whole northeast will go down. जो मौसम है वो सेफ मिनिमम लेवल तक पहुंच गया है टू लैंड अ प्लेन. कितनी ही फ्लाइट्स को या तो कैंसिल करना पड़ेगा या वो फ्लाइट्स डिले हो जाएंगी मौसम की वजह से. और एयरपोर्ट टर्मिनल्स भर जाएंगे उन गुस्साए यात्रियों से जिनके की फ्लाइट या तो डिले होगी या कैंसिल की जाएगी. और इस भयंकर मौसम के बावजूद भी जो एयर ट्रैफिक मैनेजर्स हैं वॉशिंगटन डीसी में, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो कि जॉन एफ कैनेडी न्यूयॉर्क के हैं, उनको वो ऑर्डर करते हैं टू हैव अ हाई लैंडिंग रेट. एयर ट्रैफिक जो कि बहुत ही जरूरी है आज के टाइम में, और वो चाहते हैं कि कम से कम फ्लाइट या तो कैंसिल या डिले की जाए. There's pressure because that's the business they're in. The business is moving passengers from A to B. That's what the airlines are paid, and the controllers are paid to help that work. जो वॉशिंगटन डीसी में जो है मैनेजमेंट है, वो चाहता है कि न्यूयॉर्क पे वो प्रेशर डाल रहे हैं कि वो जितनी ज्यादा से ज्यादा प्लेन्स को फ्लाइट्स को लैंड कर सके, इस मौसम के बावजूद भी वो करे. और वो
जितने की इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि न्यूयॉर्क के कंट्रोलर जितना समझते हैं उनके लिए सेफ है, उससे ज्यादा फ्लाइट्स चाहता है मैनेजमेंट जो कि वॉशिंगटन डीसी में स्थित है कि वो लैंड करे। There's pressure because that's the business they're in. The business is moving passengers from A to B. That's what the airlines are paid, and the controllers are paid to help that work. वो चाहते हैं कि इस भयंकर मौसम के बावजूद भी न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे तकरीबन 33 फ्लाइट लैंड करें प्रति घंटा। We don't like it. We're going to have the worst possible conditions for landing aircraft at Kennedy Airport. We can't use runway 13. We have to use runway 22 because of the conflicts with other airports. And because of the winds, we don't like the rate of 33 an hour. 33 is it, and you'll take it. और कितनी ही ओवरसीज फ्लाइट जो कि यात्रियों से खचाखच भरी हुई हैं, वो इस तरफ आ रही हैं और उन्हें किसी न किसी तरह तो लैंड करना ही पड़ेगा। What are we going to do with foreign traffic? We'll just give them airborne holds. Well, we know we're going to have wind shear and missed approaches, and this is going to be a very bad day. I've got very bad vibes about this day. No. 33. You'll shake it. And that set the scenario at about 7 or 8 in the morning before we left Miami. At 7 or 8 in the morning, the scenario was set for this accident to happen. लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर धुंध और लो क्लाउड्स ने जो है जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट का जो मेन रनवे है उसको बंद कर दिया है और उनके बॉस चाहे कुछ भी कहें, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स है वो 1 घंटे में 33 फ्लाइट नहीं उतार सकते इस भयंकर होते मौसम के अंदर। दूसरी तरफ 2400 मील साउथ में कोलंबिया में मौसम बिल्कुल खुशगवार है, कोई भी बादल नहीं है आसमान में और एकदम साफ आसमान है। एवियंका की जो फ्लाइट है 52 वो यात्रियों को बोर्ड कर रही है जो कि जाना चाहते हैं न्यूयॉर्क, और उन यात्रियों में है मरियम और लुइस मोंटोया और उनकी 2 जवान बेटियां। I remember during that day in the morning, before we boarded the flight, I talked to a friend that was going to pick us up at the airport in New York. He told us the weather conditions were bad. The temperature was very low, and it was rainy, and it was going to be foggy. और एक छोटे से बिजनेस ट्रिप के बाद नेस्टर ज़ोरोटा भी वापस घर जा रहे हैं न्यूयॉर्क। I received a telephone call telling me that if I could be in the airport in half an hour and not ask any questions or request anything, I would get on the direct flight to New York. कॉकपिट के अंदर फ्लाइट इंजीनियर मटायस मोयानो जो है, he overlooks the loading of more than 13,000 pounds of fuel, और इसके बाद टोटल हो जाता है तकरीबन 80,000, जो कि इस जर्नी के लिए काफी है। और उसके बाद भी जो है प्लेन तकरीबन 2 घंटे तक उड़ सकता है इस फ्यूल के साथ। Avianca 052 Heavy, request clearance for takeoff, runway 11. दोपहर को 3 बजे के कुछ बाद एवियंका की फ्लाइट 52 टेक ऑफ करती है न्यूयॉर्क के लिए फ्रॉम मेडिव विद द मैक्सिमम अलाउड फ्यूल लोड। जो कोलंबियन एयरलाइनर है वो उत्तर की तरफ चलता है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, और उसमें सवार हैं 158 पैसेंजर्स एंड क्रू। शाम होते होते मौसम ने जो है JFK एयरपोर्ट पे जो फ्लाइट ऑपरेशंस है उनको बहुत ही मुश्किल बना दिया है। Continue to the left, heading 230 vectors and holding for Cameron again. और क्योंकि ओवरसीज फ्लाइट्स हैं उनको वापस नहीं भेजा जा सकता था, तो जो है
प्लेन जो है एयरपोर्ट के ऊपर ही कितने ही टाइम तक घूमते रहते हैं before they are allowed to land. Left. There is a wind shear alert on final at 1,500 feet. Turn left. जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो आसमान में जो तादाद है प्लेन्स की, घूमते हुए प्लेन्स की, जिनको कि लैंड नहीं कर पा रहे वो एयरपोर्ट पे, वो उनकी तादाद बढ़ती जा रही है एंड दे आर ऑल सर्कलिंग endlessly over New York. 251, you are clear to land. When Mother Nature gets involved, problems develop. The tension gets higher, the pressure gets higher, decisions become more critical. JFK, any idea how long those delays are going to be? I talked to someone else over there. No idea. Yeah, I'm holding over here. Delays indefinite due to the weather. But the traffic's missing the approaches. They're going around. I just can't give you a good answer. Your guess would be as good as mine. That's the best I can tell you. जो न्यूयॉर्क का JFK एयरपोर्ट है उसमें अब सिर्फ एक ही रनवे रह गया है जिसको कि लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो लाइन ऊपर आसमान में प्लेन्स की वो है वो बढ़ती जा रही है। एक लाइन लग गई है प्लेन्स की कि उसके बाद ही वो एक के बाद नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो सिचुएशन है, नियर ब्लैकआउट सिचुएशन है, उसमें क्या हो रहा है, कितनी बार कितनी प्लेन को दे हैव टू अबॉर्ट देयर अप्रोचेस, जिसकी वजह से कि डिले हो रही है और आसमान में जो है प्लेन्स की तादाद बढ़ती जा रही है। In this case, Avianca 52 had the capability of calling several different stations, or could have called their own dispatch operation in Miami and got an update on the weather. We don't really have any evidence that they checked with anyone to get the updated weather for JFK and their alternate Boston. It's inconceivable to me that someone with a responsibility of other people's lives would fly into a deteriorating condition without checking about, hey, do we have a way out of this place? दूसरी तरफ फ्लाइट 52 के क्रू को कुछ इस बात का पता ही नहीं है, ना तो वो वेदर रिपोर्ट उन्हें दी जाती है और ना ही वो वेदर रिपोर्ट की रिक्वेस्ट करते हैं न्यूयॉर्क या उनके जो पास ऑल्टरनेटिव एयरपोर्ट था बॉस्टन की, ना तो उनको इंफॉर्मेशन दी जाती है मौसम के बारे में, ना ही वो रिक्वेस्ट करते हैं मौसम की जानकारी। एवियंका की फ्लाइट 52 enters the airspace at Norfolk, वर्जीनिया, और अब पिछले 4 घंटों से आसमान में उड़ने के बाद न्यूयॉर्क सिटी उनसे सिर्फ 40 मिनट की दूरी पर है। इस फ्लाइट के जो कैप्टन है 51-year-old Lariano Cavadis, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट हैं और पिछले 27 साल से अवियंका के लिए उड़ा रहे हैं, लेकिन उनकी अंग्रेजी कम है और जो भी कम्युनिकेशन होगा एयर ट्रैफिक कंट्रोल से दैट वुड बी हैंडल्ड बाय द 28-year-old को-पायलट मॉरिसियो क्लॉस। जो तीसरे इंसान हैं कॉकपिट में वो है फ्लाइट इंजीनियर मटायस मयानो। वो भी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ 4 महीने का ही एक्सपीरियंस है को पायलट की तरह इन दी बोइंग 707, जिस जहाज में वो इस वक्त उड़ रहे हैं। They were a highly experienced flight crew who had been into New York several times previously on behalf of Avianca. So they were familiar with the route and the procedures, and highly experienced pilots. Washington, good evening. Avianca 052 Heavy, flight level 370. Avianca 052 Heavy, Washington Center, roger. Avianca 052, I'd like you to make a right 360-degree turn, and I need you to get a pencil ready for holding instructions at Norfolk. Okay, 360-degree right turn at Norfolk, Avianca 052 Heavy. Avianca 052, you ready to copy your holding instructions? Go ahead, sir. All right, Avianca 052, you are clear to the Norfolk Vortac. Hold south on 174 with right turns and 20-mile legs.
फ्लाइट 52 की जो मुश्किलें हैं वो अब शुरू होने लगी हैं। उनको डाइवर्ट कर दिया गया है ओवर द अटलांटिक ओशन नियर नॉर्फॉक वर्जीनिया और उनको डाल दिया गया है इन अ होल्डिंग पैटर्न। अब जो एयरक्राफ्ट है वो फ्लाई करेगा इन एन इलेक्ट्रिकल रेस ट्रैक पैटर्न और जब तक कि उनको नई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलती एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से वो इसी तरह इस रेस ट्रैक पैटर्न में ही उड़ते रहेंगे। उनको अभी तक आगे के खराब मौसम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उनके पास क्योंकि 2 घंटे एक्स्ट्रा उड़ने का फ्यूल था तो इसलिए वो घबरा भी नहीं रहे थे अभी तक। ये जो एरिया है दोस्तों इन द नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज अमंग द वन ऑफ द मोस्ट कंजेस्टेड एयर स्पेसेस इन द वर्ल्ड। जितना भी इनकमिंग ट्रैफिक होता है, ओवरसीज ट्रैफिक होता है, उनको कितनी बार डाइवर्ट किया जाता है एक के बाद एक कंट्रोलर के थ्रू और उसके बाद ही न्यूयॉर्क एरिया में जो 3 मेजर एयरपोर्ट हैं उसके बाद ही इन तीनों में से किसी एक पे उस एयरक्राफ्ट को लैंड करने की परमिशन मिलती है आफ्टर गोइंग थ्रू अ पाइपलाइंस ऑफ कंट्रोलर्स नेटवर्क। और वो 3 मेजर एयरपोर्ट्स हैं JFK, LaGuardia और न्यूयॉर्क। आज जो है एवियंका की फ्लाइट 52 जो है 6 अलग अलग एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की डायरेक्शन के अंडर आएगी और जो कि हर एक जो है चाह रहा है कि वो उसको न्यूयॉर्क के ऊपर घूमते हुए उस जहाज को सेफली किसी तरह जमीन पे नीचे उतार सके। The line, it's indefinite holding at this time. 080. We just had 3 missed approaches on 22, right? We just went below the minimums. We just had 4 misses on 22, right? Which is our primary runway. The visibility is getting worse, and it's worsening. All right, how many are you holding? We're still holding the 12 or 13 we had earlier. We're expecting some pretty lengthy delays in another hour or so. और जैसे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो है मुश्किल से कोशिश कर रहे हैं, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं टू क्लियर द बैकलॉग ऑफ द प्लेन्स इन द स्काई। एवियंका फ्लाइट 52 जो है 19 मिनट तक सिर्फ वर्जीनिया कोस्ट के ऊपर ही सर्कल करती रहती है और वो वेट कर रही है कि उसको आगे के लिए बढ़ने के लिए परमिशन दी जाए न्यूयॉर्क सिटी तक जाने के लिए। Avianca 052, expedite descent through level 33. Just leave flight level 330 within 3 minutes, please. Okay, we'll leave 330 within 3 minutes. Avianca 052 heavy. एवियंका का वो जहाज को फाइनली परमिशन मिल जाती है न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ने के लिए, लेकिन उनको वहां पे जो उनकी आने वाली मुश्किलें हैं उसके बारे में उनको अभी तक कुछ भी ज्ञान नहीं है। एवियंका फ्लाइट 52 इट्स ऑन इट्स फाइनल अप्रोच टू न्यूयॉर्क, लेकिन उन्हें इस बात की ज्ञान नहीं है, इस बात का पता नहीं है कि उस एयरपोर्ट JFK एयरपोर्ट पे जो लैंडिंग कंडीशन है वो एकदम सेफ लेवल से थोड़ा ही ऊपर है। वो एकदम अंधेरी रात है जिसमें कि धुंध भी है, बारिश भी है और जबरदस्त हवाएं भी चल रही हैं उस रात। This is Central. I was wondering how your weather was doing up there. It's pretty bad at this point. We got all sorts of wind shears and missed approaches. Do not see the runway. You're still trying on a 30 rate. Yeah, rather unsuccessfully at this point. The winds are starting to pick up. 20% of the guys attempted approaches went on to miss. When the northeast goes down, it goes down. It goes down for a big area. And a lot of quick decisions have to be made. You just can't say, wait a minute, stop. Everyone's en route. इस एवियंका की फ्लाइट ने अभी तक यूज कर लिया है वो मात्रा ऑफ फ्यूल जो कि निर्धारित फ्लाइट प्लान के लिए था।
और अब वो इस्तेमाल करना शुरू करेगा उसका रिजर्व स्टॉक। Washington Center, Avianca 052 Heavy. Avianca 052 Heavy, go ahead. Do you have any information about delays to Boston? Boston, I'll check that, sir. Thank you. जो क्रू है वो सोच रहा है अब कि वो अपने प्लेन को डाइवर्ट कर ले अपने दूसरे ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि बॉस्टन है और जो कि न्यूयॉर्क से 210 मील की दूरी पे है। जो वॉशिंगटन का कंट्रोलर है वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि बॉस्टन पे क्या वेदर कंडीशन है, लेकिन दूसरे एयरक्राफ्ट के बीच में वो बिल्कुल अवियंका की इस रिक्वेस्ट को भूल ही जाता है और अवियंका फ्लाइट 52 के वो क्रू जो है वेट ही करते रहते हैं उस जवाब के आने का जो कि कभी आया ही नहीं, और धीरे धीरे जो उनका कीमती फ्यूल रिजर्व है वो भी कम होता जा रहा है। Ask him about Boston again. Did you ask about delays at Boston, or are we going to approach Kennedy? Okay, Avianca 052, it looks as though New York Center may have to hold you for possibly up to 30 minutes. Expect clearance on course just momentarily with stands right now. An additional holding of at most 30 minutes. With that in mind, do you want to check on an alternate airport? I believe Boston is. I'll check on Boston. Okay. We're now descending to 190 and expecting information about Boston. Okay, Avianca 052. I've been advised Boston is open and accepting traffic. If you do need that as an alternate airport. Okay, stand by a minute. तो फ्लाइट इंजीनियर है वो कैलकुलेट करना शुरू करते हैं कि उनके पास कितना फ्यूल बचेगा आफ्टर दिस 30 मिनट्स ऑफ होल्डिंग, और इससे पहले कि वो रिस्पॉन्ड कर पाते वॉशिंगटन कंट्रोलर ने उनको एक नई होल्डिंग पोजीशन असाइन कर दी। Avianca 052 Heavy, make a right turn now to intercept the Cameron 2 arrival. Cleared on course, maintain flight level 190. फ्लाइट 52 अब न्यू जर्सी कोस्ट की तरफ है, उस इलाके में जिसको बोला जाता है कैमरन, और वो सिर्फ 45 मील दूर है फ्रॉम JFK एयरपोर्ट, लेकिन वो तो बहुत ही दूर लग रहा है इस वक्त। During all those holding times, I was praying and trying to see where we're going to land. I mean, when we're going to be on the ground. I don't want to be here anymore. Ladies and gentlemen, this is your captain. I apologize for the delay, but it appears we're going to be holding as we wait our turn to land in New York. Please remain seated with your seatbelts fastened, and we should have you on the ground shortly. Thank you. There was a point where the captain announced that there was traffic in the New York City area and that we would be on hold for a while and he would get back to us. और ये आखिरी कम्युनिकेशन होगा जो कि क्रू विल हैव विद देयर पैसेंजर्स, और अब उस फ्लाइट की कंडीशन इज बिकमिंग वर्स फ्रॉम बैड। Avianca 052, descend and maintain 14,000. और अब उनको हैंड ओवर कर दिया जाता है टू द न्यूयॉर्क कंट्रोलर्स, और आज उनके लिए बहुत ही अच्छा दिन नहीं है क्योंकि तकरीबन 39 एयरक्राफ्ट आसमान में घूम रहे हैं who are trying to land, और कितने ही जहाज नीचे जमीन पे है जो कि वेट कर रहे हैं ऊपर उड़ने का। Avianca 052, expect for the clearance at 0139. Avianca 052 Heavy, Roger. Avianca फ्लाइट 52 का जो क्रू है वो थक चुका है, फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, लेकिन फिर भी वो उस न्यूयॉर्क के ऊपर चक्कर काटते ही जा रहे हैं और अपनी बारी के आने का वेट कर रहे हैं जिससे कि उनको नीचे जमीन पे वो प्लेन को उतार सके। लुइस मोंटोया जो कि पिछले 5 घंटे से हवा में
सफर कर रहे हैं वो बड़े चिंतित हैं। वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी किसी तरह वो अपनी वाइफ और अपनी बेटियों को जमीन पे उतार सके और वो अपने घर जा पाएं क्वींस में। As the flight started to prolong, we started to feel uneasy. My wife was carrying the baby at all times, and we were wondering what could be happening. After all, they weren't giving us any information, and most people began to feel nervous. और फाइनली न्यूयॉर्क सेंटर वो खबर देता है एवियंका फ्लाइट 52 के क्रू को, जिसका वो इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। वो उनको लैंड करने की परमिशन देते हैं JFK एयरपोर्ट के ऊपर। Avianca 052 Heavy, Avianca Kennedy is 2400 feet. Can you accept an approach? That's an affirmative, sir. और वो सोचते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कैलामिटी। उस खराब होते मौसम और तकरीबन जीरो विजिबिलिटी के अंदर उनके आगे के कितने ही प्लेन्स जो थे वो अटेम्प्ट करने की कोशिश में नाकामयाब हुए थे, और वो एक बार फिर से ट्राई कर रहे थे अपने अपने जहाजों को लैंड करना। और इस कोलंबियन एयरलाइनर के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के पास थी एक और बुरी खबर। Avianca 052, continue to the left, heading 230 vectors, holding at Cameron again. और उनको फिर होल्डिंग में डाल दिया जाता है। Okay, 230 vectors for holding at Cameron. Kennedy, Avianca 052. Avianca 052, go ahead. Thank you, sir. You have any estimates, sir? Avianca 052 Heavy, I might be able to get you in right now. Stand by. Thank you. और क्रू जो है चुपचाप से किसी अच्छे जवाब का इंतजार करता है, लेकिन जब वो जवाब आता है तो उनके लिए होती है और भी ज्यादा बुरी खबर। Avianca 052, we just got off the line. It's indefinite holding at this time. The Avianca 052, turn left, heading 090, hold at Cameron, maintain 1000. उनको यहाँ आते हुए तकरीबन 48 मिनट्स का होल्ड अप किया गया था, और उसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद भी वो पिछले 25 मिनट से न्यूयॉर्क के ऊपर ही उड़ रहे थे, जो कि कुछ ही चंद कदमों की दूरी पे था उनकी डेस्टिनेशन JFK एयरपोर्ट। They were progressively moving toward JFK, and they were held in the air for 3 times. This certainly would put some stress on the crew as to the fact they want to go from A to B. They don't want to fly in a racetrack for an hour just holding. रात के 8:55 पे जो फ्लाइट रिकॉर्डर होता है, it started recording the final 40 minutes of the Avianca flight 52. और क्रू इस समय तक या तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था और they were too timid to complain. और कुछ ही देर के बाद इनको दी जाती है एक और बुरी खबर। Avianca 052, expect for the clearance time 0205. Expect for the clearance in 20 minutes. अब जो है stress level in the cockpit is steadily rising. 0205. Well, I think we need priority. We are passing out of fuel. Avianca 052, Roger. How long can you hold and what is your alternate? Okay, stand by a minute. फ्लाइट इंजीनियर बहुत जल्दी से कैलकुलेट करते हैं कि उनके पास कितना फ्यूल बच गया है। Yes, sir. I would be able to hold for 5 minutes. That's all we can do. Avianca 052, Roger. And what's your alternate? We said Boston. But it's full of traffic, I think. Avianca 052, say your alternate again. It was Boston, but we can't do it now. We'll run out of fuel. Avianca 052, cleared Atlanta Kennedy via heading 040, maintain 1000 at speed 180. The Avianca crew, when they felt it, they were being handed off to an approach controller now and given a heading and a lower altitude. I'm sure in their minds they thought,
Well, they even commented on the cockpit voice recorder, we're being handled or we're being taken care of. It's okay if I send 4 more your way? Casino, I'm back in the hold again. I got 4 in the stack and there's no end in sight. I can't keep your times. I'd be guessing if I did. This guy's killing me. Avianca 052 only has 5 more minutes in the hold. You gonna be able to take him, or I'll set him up to his ultimate? What is his speed now? I'm not sure, to be honest with you. Holding speed. Slow him to 180 and I'll take him. Say again? Slow him to 180 knots and I'll take him. You guys holding a lot? Man, we're holding all up and down the coast. Ah, it's good practice, man. और इस क्रिटिकल हैंडओवर जो कि एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर के बीच में हुआ था, उसमें अवियंका फ्लाइट 52 के जो क्रिटिकल फ्यूल लेवल था उसके बारे में कोई जिक्र नहीं हुआ, जैसे कि आपने भी अभी सुना. Nobody told the next controller that. So the next controller, when Avianca came in on the frequency, the controller just said, right, I've got you, proceed to Kennedy, or I'm going to put you in a hold, and put him in a holding pattern over the last approach fix. The options were gone. Now the aircraft could only get into Kennedy. Avianca, descend and maintain 7,000. Descending to 7,000. Avianca 052 heavy. Avianca 052, before you go, there is a wind shear alert On final at 1,500 feet. Turn left, heading 090. Left, heading 090. Avianca 052 heavy. The high-level wind shear was passed on early on, so he was aware of that. But the low-level wind shear below 500 feet was not passed on. कोलंबिया से लेकर यहाँ तक सारी फ्लाइट में जो इस प्लेन का ऑटो पायलट था वो काम ही नहीं कर रहा था. इसके लास्ट फ्लाइट पे इसको रिपोर्ट भी किया गया था, लेकिन जो मेंटेनेंस क्रू था उन्होंने इसको ठीक नहीं कर पाए थे. और पिछले 6 घंटे से इस जहाज को मैनुअली उड़ाने का जो स्ट्रेस था वो अब इट वाज फाइनली टेकिंग इट्स टोल ऑन कैप्टन Keviadis. To me, it's inconceivable someone would have to fly at Boeing 707 without an autopilot. I mean, that's a high workload in smooth air. और अब 1 घंटा 17 मिनट तक इस तरह उड़ने के बाद एवियंका फ्लाइट 52 के क्रू ये समझ रहे हैं कि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है जमीन पे, उनको उनके क्रिटिकल फ्यूल लेवल के बारे में जानकारी है और वो उनको प्रायोरिटी लैंडिंग करने की परमिशन देंगे. कैबिन में जितने भी पैसेंजर्स और क्रू है उनको इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है कि उनके प्लेन में फ्यूल जो है बहुत ही कम रह गया. इट इज नाउ क्रिटिकली लो. दूसरी तरफ कॉकपिट में जो तीनों क्रू मेंबर्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि अगर वो पहले चांस में रनवे को ढूंढ ना पाए किसी भी कारण से, इस मौसम की वजह से या नियर जीरो विजिबिलिटी की वजह से, तो अगर उन्हें सेकंड चांस लेना पड़े तो वो क्या फॉलो करें, किस तरह फॉलो करें, किस तरह उनका स्टैंडर्ड प्रोसीजर कहता है फॉलो करने को, और ये बहुत ही एक नॉर्मल तरीका है. Be applied slowly and to avoid rapid accelerations and to have a minimum of nose-up attitude. To maintain what? Minimum nose-up attitude. That means... फ्लाइट इंजीनियर इस बात से चिंतित है कि अगर उनके कैप्टन नोज अप करते हैं प्लेन का एकदम शार्पली, तो हो सकता है कि जितना भी फ्यूल बचा है वो टैंक के पिछले भाग की तरफ चला जाए और जिससे कि इंजन एकदम बंद हो जा सकते हैं. Fuel during the go-around. What it means is it doesn't contain fuel for feeding itself and a flameout could occur. And it is necessary to lower the nose again. Right now we are proceeding to the airport inbound. We have 17 miles. Roger. This means we'll have hamburger tonight. Avianca, descend and maintain 3,000. Descend and maintain 3,000. Avianca 052 heavy. 3,000 feet. They got us. They're already vectoring us. No, they are descending us. And they are giving us priority. Avianca 052 heavy. Contact Kennedy Tower 119.1. Good day.
और लैंडिंग करने के कुछ मिनट पहले ही एवियंका की फ्लाइट 52 इज हैंडेड ओवर टू दी JFK टावर कंट्रोलर और जिनकी की शिफ्ट अभी खत्म होने वाली है। Avianca 052 Heavy, Kennedy Tower 22 left. You are number 3 following 727 traffic on a 9-mile final. Avianca 052 Heavy, roger. Can I lower the landing gear yet? No, I think it's too early. If we lower the landing gear, we have to maintain a very high nose attitude. उनका फ्यूल लेवल इतना कम हो चुका है कि जो फर्स्ट ऑफिसर है ही इज ट्राइंग टू डिले द डिप्लॉयमेंट ऑफ द लैंडिंग गियर, और अगर वो लैंडिंग गियर डिप्लॉय कर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि ड्रैग बढ़ेगा, और ड्रैग बढ़ेगा तो पावर ज्यादा यूज करेगा इंजन, और हो सकता है जितना फ्यूल उनके पास बचा है वो भी शीघ्र खत्म हो जाए। I was so happy. For me, it was like a joy. I mean, we're going to land soon, and this is going to be end. Avianca 052, what is your airspeed? Avianca 052, 140 knots. Avianca 052, can you increase your airspeed 10 knots? 10? Okay, 10 knots, increasing. Increase. 10 knots more. Tell me things louder because I'm not hearing it. Lower the gear. Gear down. Avianca 052, 22 left, wind 190 at 20, cleared to land. Clear to land, Avianca 052 Heavy. Wind check, please. 190 at 20. With this deteriorating weather and flying only on fumes, एवियंका फ्लाइट 52 के क्रू के पास सिर्फ एक ही मौका उन्हें मिलेगा टू ट्राई टू लैंड दिस प्लेन विद ऑल इट्स passengers and crew safely on the ground. Avianca 052, say airspeed. 145 knots. Are we clear to land now? Yes, sir, we are clear to land. Stand by. Flaps 50. Landing checklist complete. It was extremely important that Avianca 52 landed on their first approach JFK. The voice recorder revealed that the captain was certainly quite concerned about the fuel state, and he was talking aggressively with the first officer, putting out flaps, getting the airplane configured. The flight engineer had to know they were out of fuel. And when they came in for the first approach, it was time for the flight engineer to say, this is the only approach we're going to be able to make. And he didn't. Give me 50. Flaps 50 now. All set for landing. Standing by for lights. Slightly below glide slope. 1,000 feet above field. Instruments cross-checked, slightly below. Stand by for lights. Stand by. The wind is slightly from the left, 190 to 20. Below glide slope. अब उनके पास सिर्फ 10 मिनट का ही फ्यूल बचा था और वो तकरीबन 2 मील दूर थे फ्रॉम दी रनवे, लेकिन इस समय जो है उनको वायलेंट विंड शीयर का सामना करना पड़ा, जिससे कि क्रू को उस प्लेन को और धीरे करना पड़ा। They were getting like 60 knots of wind on the nose, and then as they descended on down through about 500 feet to the ground, they were down to 20 knots. So that's 40 knot change and 1,000 feet of elevation. That's a lot. This is the wind shear. अब जो है विंड अपना डायरेक्शन बदल रही थी और फोर्स कर रही थी उनको जमीन की तरफ धकेलने का। Glide slope. Glide slope. Some great 500 feet. Glide. The captain now is desperately trying to search for the runway, but it is all shrouded in fog and low clouds. Train. Lights. I don't see it. और प्लेन का वार्निंग सिस्टम उन्हें बता रहा है कि वो एकदम क्रैश करने वाले हैं। Glide slope. Some great 500 feet. Just 2 miles away from the touchdown, this aircraft has been caught into a violent wind shear और कैप्टन केवेडीज जो हैं
इससे निकलने के लिए फुल थ्रॉटल डालते हैं, प्लेन को डालते हैं फुल थ्रॉटल में, जो कि और तेल जल्दी से यूज करना शुरू कर देता है। इतना कीमती है जो तेल इस प्लेन का आज की रात में। Give me the landing gear up. Landing gear up. The airplane was about 200 feet above the ground, about 2 miles from the runway, which was well below the glide slope and very dangerous. So the airplane almost crashed on its first approach. When you get a missed approach, now it changes the whole ball game. Request another traffic pattern. Executing a missed approach. Avianca 052 heavy. The operation of pulling the plane up in the missed approach was a very violent one. It was a very steep climb. So we were all thrown back by gravity towards the back of our seats. Something's going on here. Anything, we're going to crash. This is terrible. I mean, we start praying, but then I pass out. I couldn't handle it anymore. और जैसे ही कैप्टन केवेडीज जो है प्लेन को एकदम स्टीप इंक्लाइन पे ले जाते हैं, प्लेन को क्रैश लैंडिंग से बचाने के लिए जो जितना भी प्लेन में फ्यूल बचा था वो टैंक के पिछले भाग में चला जाता है और फ्यूल पंप से एकदम दूर हो जाता है। You cannot accelerate the aircraft forward rapidly and you shouldn't pitch it rapidly. Smooth with the nose. Smooth with the nose. You have less than 7,000 pounds. You have to be very careful, or you can slosh that fuel to the back of the tank and unport the inlet to the engines. एवियंका की फ्लाइट 52 के एकदम वायलेंट क्लाइम से जो है पैसेंजर्स एक तो घबरा भी गए हैं और कितने तो बहुत गुस्सा भी गए हैं। My baby Daniela also started to feel uneasy and began to cry. We began to get the feeling that something was about to happen. I buckled up with the baby just in case there was a problem. She's very little, and I was concerned that my weight could have crushed her. I had her in my arms, and we began to say the Lord's Prayer. I don't know what happened with the runway. I didn't see it. I didn't see it either. I didn't see it. Avianca 052, you were Making a left turn, correct, sir? Tell him we are in emergency. 2,000 feet. That's right, to 180 on the heading, and we'll try once again. We are running out of fuel. Okay. What did he say? I already advised him that we are going to attempt again. Advise him we are in emergency. Do you tell him? Yes, sir. I already advised him. जो शख्स टावर कंट्रोल में था उसकी चूंकि शिफ्ट समाप्त हो जा रही थी, उसने एवियंका की फ्लाइट 52 को फिर से हैंडओवर कर दिया था अपने साथी को इन दी अप्रोच टावर, और अब एवियंका की फ्लाइट 52 को फिर से सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। Attack approach on 118.4. Approach, Avianca 052 heavy. We just missed a missed approach and we are maintaining 2,000. Flaps 14. Avianca 052 heavy, New York. Good evening. Climb and maintain 3,000. Advise him we don't have fuel. Climb and maintain 3,000. We are running out of fuel, sir. Okay, fly heading 080. Do you already advise him we don't have fuel? Yes, sir. I already advised him. We are going to maintain 3,000 and he's going to get us back. As they get back in the pattern and circle the field and come back in again. That again adds to the traffic jam that was being created at Kennedy Airport. Avianca 052 heavy, I'm going to turn you about 15 miles northeast and then bring you back onto the approach. Is that okay with you and your fuel? What did he say? The guy is angry. I guess so. Thank you very much. These guys were out, and they didn't say we were out. And he allowed the approach control to vector them way out in the original pattern and 15 miles north of the outer marker again. एवियंका की फ्लाइट 52 को फिर से निर्देश दिया जाता है for a longer approach pattern as it is given another chance to make a landing at the airport. और जो प्लेन है अब उसमें जो है फ्यूल बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में बचा है और क्रू जो है फिर से वेट कर रहे हैं अब ग्राउंड कंट्रोलर्स को कि वो उनको फिर से एक और लैंडिंग करने की परमिशन दे।
in their minds that they were being handled and taken care of, and they had enough fuel to go around and shoot the approach. But on the way, they were given a 360 turn because of traffic spacing, and then they were run way out towards Long Island and vectored all around, which was equivalent to holding for another 15-20 minutes. Did you get clearance yet? Can you give us a final yet? Avianca 052 Heavy. Avianca 052. Affirmative, sir. Turn left, heading 040. Climb and maintain 3,000. Negative, sir. We are running out of fuel. Okay, turn left, heading 310, sir. Set flaps 14. Okay, and you're number 2 for the Approach. I just have to give you enough room so you can make it without having to come out again. Okay. We're number 2 and flying 360 now. Avianca 052 Heavy, turn left, heading 330. अब जो एयरक्राफ्ट की लाइटें हैं वो भी फ्लिकर करना शुरू कर देती हैं, जिसका की मतलब है कि अब फ्यूल बिल्कुल ही खत्म हो रहा है. 330 on the heading, Avianca 052. Once there's no fuel flowing through the pump out of the tank, an amber light comes on to tell you that tank is empty. Flame out! Flame out on engine number 4! Flame out on it! Flame out on engine number 3! Come the runway. और पैसेंजर्स अब सुन पा रहे थे इंजन्स जो कि धीरे धीरे से बंद हो रहे थे, उनकी आवाज. When the engines went off, I looked over to the lady that was sitting next to me, and I asked her to give me her hand. And I philosophically accepted, I might die here. This is it. Avianca 052, we just lost 2 engines, and we need priority, please. Avianca 052. Turn left, heading 250. Intercept the localizer. 250, roger. Select the ILS. ILS. Avianca 052, you're 15 miles from the outer marker. Maintain 2,000 until established in the localizer. Cleared for ILS 22 left. Roger, Avianca. Did you select the ILS? He's ready on 2. When all the engines flame out and the generators fall off the line, a considerable amount of power is lost, electrical power is lost. In the cabin, the screams, the crying, and then this terrible sound of the wind against the fuselage as the plane drops from the sky. Avianca 052, radar contact lost. Avianca is missing due to the weather thing. Yeah, Avianca 52 lost an engine. We're trying to find out why. Yeah, we're no longer talking to Avianca. He's 15 northeast of Kennedy. Ah, wonderful. At Clipper 18, turn left, heading 180. कोलंबिया छोड़ने के 6.5 घंटे बाद Avianca Flight 52, it is missing somewhere over New York. Yes, hello. I live in Cove Neck in Oyster Bay, and there is a plane crashed in our yard in front of our house. When I woke up, the first thing that I did, I put my hand over here in my back, and I was bleeding. I said, "Oh my God, we crashed." Well, my legs were broken, and I had blood all over the place. El asiento en el que estaba sentada la hija mía, sí recuerdo que The estaba... seat where my daughter was sitting was totally destroyed by pieces of steel that happened to have come from the wing. Pedazos de hierro que entraron del ala y las... I found my baby Daniela amongst the pieces of a torn-up, twisted chair. And I picked her up like this, and she was drenched in blood. Bañada en sangre. एवियंका की फ्लाइट 52 क्रैश हो गई थी लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में. तकरीबन 17 मील की भी कम दूरी पे था उनका डेस्टिनेशन JFK एयरपोर्ट. From deep inside the woods, medical technician Bob O'Brien
सुन पा रहे थे उन जो लोग बचे थे उनकी आवाजों को, और बाद में उन्होंने देखा द shattered Boeing 707 aircraft. What I first heard was there were just some people who were crying in pain, but it was apparent immediately what had happened when the plane hit the mountain and just stopped dead. It just fell out of the sky. That's how witnesses describe the crash of Avianca Flight 52. A strangely silent crash. There was not a big fire here. That will make it easier for investigators to examine if there were any gas or engine problems. There have been reports of lightning in the area just before the plane went down. The spokesman for the controllers union says that Kennedy is critically understaffed, a problem that is compounded by bad weather. Rescuers have not yet given up on finding more victims. Lo primero que me acuerdo es que yo miro y First thing I remember is that I looked up and I saw a priest. He was praying for me and I was lying down on the ground. Right above us, I saw 3 or 4 helicopters flying over us. 3 o 4 helicópteros volando encima mío. Managed to get up on top of the fuselage, and there's that door handle that says in case of emergency pull here. So I pulled that door handle, and that door handle just went. The door came open about 4 inches. And then I was able to flip that over, and I could just see piles and piles of people strapped in their seats. The extreme G-force of the crash has broken the cockpit, और उसके बाद वो तकरीबन 100 फीट दूर जाके एक घर के ऊपर गिरा. We couldn't get into the cockpit to get to the pilot and the co-pilot. All those chairs, they all just hit that cockpit door and just piled into that fuselage, and just all that added weight and all that inertia now just took over in the front of that and just popped it off, and it rolled to its left side and stopped up against the tree. Come on, somebody get the back. And I saw some cables, and I saw a big hole in the fuselage over the passengers that were sitting next to me who were kind of unconscious. And on top of me was this guy who was bleeding, a big guy, I don't know who he was, but he was on top of me, but I was sitting. I pulled myself with those cables towards that hole, which was over the wing. I started screaming, "Hey, help me out, take me out of here." And then somebody, when they realized that I was alive, they removed they took away the guy who was on top of me, and they took me out of the airplane. At that moment, a fireman was climbing on the wing, and he saw me, and he said, "There's a guy here," and he pulled me out. 37 fire and rescue companies are quickly mobilized, और ये 9/11 से पहले का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था in the New York area. That little girl was sitting up on the fuselage and she was crying, "Mi madre, mi madre." And that imprint of horror just was, you just in your mind's eye focus right back in on, I saw mi madre, I saw her mother. And I know what that little girl was seeing. It was horrible enough for me, and I'm a professional rescuer. I realized that my baby was dying, so I began to scream. Please help me. I had the baby here, please. The plane had crashed into the wealthy neighborhood of Cove Neck. और पास ही में मशहूर टेनिस खिलाड़ी जॉन मैकेंड्रो के फादर का घर था, और मेडिक्स ने उनके लॉन्स में एक मेकशिफ्ट यूनिट स्थापित किया था. और जब सुबह हुआ तकरीबन 10 घंटे बाद, तब उस जहाज के रेक से निकाले जा चुके थे 85 सर्वाइवर्स.
जो 9 क्रू मेंबर सवार थे इस जहाज के ऊपर, उनमें से सिर्फ एक ही जो लीड फ्लाइट अटेंडेंट थी वो ही बचे थे, और जो 11 बच्चे सवार थे उस जहाज पे, उसमें से all but one were found alive. And among the dead are so many passengers who had drugs hidden inside their body. It became an issue later on. They posted police officers at the morgue because they were afraid that the drug cartel would come in and try to steal the bodies, because they were worth $1 million apiece and they were waiting for this shipment, and there were a lot of them. बॉब ओब्रायन जो है वो प्लेन के टेल सेक्शन में किसी सर्वाइवर को ढूंढ रहे हैं, और वहां वो पाते हैं FAA investigators who are struggling to break free the black boxes of the plane. I grabbed the handle and just pulled the whole box out and took that out and brought that out the door and gave it to them. और जैसे जैसे लोग निकाले जा रहे हैं इस जहाज के अंदर से, तो ऑन साइड इन्वेस्टिगेशन जो है शुरू हो गई है इस मामले में, और इस टीम के इंचार्ज हैं बैरी ट्रॉटर, जो कि हैं NTSB के। ट्रॉटर जो कि पहले एक पायलट थे, लेकिन अब वो एक इन्वेस्टिगेटर बन गए हैं, जबकि उन्होंने अपनी राइट आर्म खो दी थी एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के दौरान। The condition of the aircraft was really astonishing to see that much of the structure was left in the condition that it was in. It hit right on about a 28-degree embankment, and with the wings and all the other trees, it only slid 28 feet, so it hit and stopped instantly. और चूंकि उन्हें इस फ्लाइट के बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं थी, फिर भी इन्वेस्टिगेटर्स को एक पहला सबूत मिल गया था। You could look at the engines right away and you could tell the engines were not turning. So there was no power on the engines. That was the first big clue. ट्रॉटर और उनकी टीम जब फ्यूल टैंक्स का मुआयना करते हैं तो उन्हें दिखाई देता है जस्ट अ फ्यू गैलन्स ऑफ जेट फ्यूल स्टिल ऑन बोर्ड, और वो समझ जाते हैं कि बोइंग 707 के जो इंजन्स थे उन्होंने वो टर्न क्यों नहीं किए थे। लेकिन ये सवाल का जवाब अभी भी बाकी था कि इस हादसे के लिए किसको ब्लेम किया जाए, किसकी गलती थी। और इस कोव नेक के इलाके में जो सैल्वेज वर्कर्स हैं, दे स्टार्ट द वर्क ऑफ डिसमेंटलिंग दिस ह्यूज एयरक्राफ्ट। लेकिन एक सवाल का जवाब अभी भी बाकी था कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इस फ्लाइट एवियंका फ्लाइट 52 के, जिसमें कि फ्यूल खत्म हो जाता है और बाद में 72 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की मौत हो जाती है इस हादसे में। The answer will be worth millions of dollars and will affect so many lives. और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड के वॉशिंगटन DC के लैब्स में इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी ये जानना चाहते हैं कि क्या जवाब है। वो जो इन 2 ब्लैक बॉक्सेस में जो डाटा स्टोर हुआ है वो जल्दी से जल्दी उसको रिकवर करना चाहते हैं। इनमें से जरूरी होता है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, जो कि काफी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करता है जहाज की, यानी कि उसका एल्टीट्यूड, एयर स्पीड और उसकी हेडिंग। When we recovered the flight data recorder and brought it to our lab in Washington, we opened it and found that the foil wrap was not hooked up. So someone had actually intentionally taped the end of the foil so it wouldn't fly around and put it back in the airplane. Without the crucial flight data recorder, investigators now will have to depend on the
कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जिसमें कि वो 40 मिनट की रिकॉर्डिंग्स है बिटवीन द फर्स्ट ऑफिसर एंड द एयर ट्रैफिक कंट्रोलर. Stand by. All set for landing. Slow flight, slow. And it was apparent from the voice recorder transcript and tape that the captain was not understanding the first officer's radio communications that were being made in English. Everybody wants to blame the pilot, but he may be the last person to make a decision, and the scenario which caused him to be in that position where he makes the decision was created by several other people along the route. The captain asked the first officer about 9 times to clarify information or repeat it or to pass on information. We are going to attempt again. Advisor, we are in an emergency. Do you tell him? Did he make a conscious decision to run out of fuel? No. He was sucked into a situation by the air traffic controllers where he ran out of fuel. Once the airplane got into the JFK area, there was certainly a serious breakdown in communications on the part of the pilots within the cockpit, on the part of the pilots talking to controllers, and controllers talking to the pilots, and the controllers amongst themselves, because there were handoffs and some of the urgency was not passed on within the controllers system. So we had multiple breakdowns in multiple areas here that ultimately led to this accident. Flight slow! जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है उससे पता लगता है कि एवियंका फ्लाइट 52 का क्रू जो था बहुत ही डेस्परेट था अपने जहाज को जमीन पे उतारने के लिए उस खराब होते मौसम में और वायलेंट विंड शेयर के बीच में और विदाउट द हेल्प ऑफ द ऑटो पायलट. In this case, the captain had a difficult time maintaining the glide slope during the approach with the wind shear. Didn't see the airport and had to make a go-around. That almost doomed the airplane at that point. The information being given to pilots en route was a wind shear up as high as 1,500 feet. But their pilots on approach were encountering wind shear as low as 300 feet. And that wasn't passed on to the Avianca pilot. This is the wind shear. The crew of the Avianca Flight 52 is caught unguarded as they descend below 500 feet. एक vertical wind जो है उनको नीचे जमीन की तरफ फोर्स डाउन कर रही है जिससे कि वो तकरीबन रनवे से 2 मील दूर ही ऐसा लग रहा है कि वो क्रैश कर जाएंगे जमीन में. दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कि एवियंका की फ्लाइट 52 में क्योंकि फ्यूल नहीं था उसकी वजह से कोई आग नहीं लगी और कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ जिससे कि जो बाकी लोग जितने लोग बच पाए थे वो बच पाए फ्रॉम ऑलमोस्ट सर्टेन डेथ. If the flight would have found some level ground, it was conceivable he would have slapped the fuselage down and slid to a stop. With no fuel, there would have been no fire. And I think it's very possible that most of the people would have survived it in that case. और जैसे कि इस केस में सुनवाई शुरू हुई तो लॉयर जॉर्ज टॉम्किंस is confronted by the controllers who maintain कि जो क्रू था एवियंका फ्लाइट 52 का उन्होंने इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ प्रायोरिटी शब्द का ही इस्तेमाल किया था. The government took the position that the pilot never declared an emergency, so no one knew that he had a problem. But saying you're getting low on fuel and saying you cannot make your alternate, the word emergency is not necessary to say. Negative, sir. We are running out of fuel. We just lost 2 engines and we need priority, please. And they thought they were telling them when they said we need priority. Para nosotros en español la palabra prioridad significa. In Spanish, for us the word priority means first. Corre a mí, te estoy necesitando. Attend to me, run to me. I need you right now. No sé si es que. I don't know if priority in other languages means that you can wait. Que puedes esperar. To me, priority means a priority. If you ask a child, what is a priority to you, what are you going to say? He doesn't need to say an emergency. Avianca 052 only has 5 more minutes in the hold. You going to be able to take him, or I'll set him up to his alternate? What is his speed now?
I'm not sure, to be quite honest with you. Holding speed. NTSB ने conclude किया the handling of the Avianca flight 52 by the air traffic controllers was proper as per the information they were receiving from the crew. लेकिन इसके बाद कितने ही पैसेंजर्स बहुत गुस्से में आ गए जब उन्हें पता लगा कि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं उनकी कोई भी गलती नहीं मानी गई and they were claiming that it was justice not done properly. Avianca ने फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को सू किया था और ये FAA ही है जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को एम्प्लॉय करते हैं. एवियंका का मानना था कि जब क्रू ने बताया था कि वो फ्यूल उनके प्लेन में कम होता जा रहा है, दे वर रनिंग लो ऑन फ्यूल, तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को कुछ और करना चाहिए था उनके मुताबिक. The FAA settles and ends up paying around 40% of the $200 million compensation which was due to the victims. If you listen and read the tapes, the transcripts of the tapes of each air route traffic control center along the route, and the final to New York Tracon, New York Tower, Kennedy Tower, you'll find 20 places where this accident could have been avoided if somebody had done something differently. और जो 85 पैसेंजर्स जो बच गए थे उनमें थे वो मोंटोया की दोनों बेटियां शामिल. The day just before the flight, we took a long trip to visit the Virgin Mary. This is a very important sanctuary in Medellin. Perhaps it was a miracle of God and the Virgin that the four of us survived. It was a miracle, and we feel blessed by that. कितने ही पैसेंजर्स जो थे उनको उनके जख्मों से उभरना आसान लगा और ये सवाल का जवाब उनके लिए मुश्किल था कि उनकी वो फ्लाइट एवियंका की 52 उसमें फ्यूल कैसे खत्म हो गया था. I had to learn to walk from scratch. It's difficult enough to deal with the injuries. It makes me very angry to think that a plane went down with 161 souls and had almost half the people lost their lives because of a word. So, दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड आपके फेवरेट शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स का. और ये शो आप सुन रहे थे आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ. और आज के शो में हमने चर्चा करी 25 जनवरी 1990 की एक घटना, एवियंका की फ्लाइट 52 जिसमें कि फ्यूल खत्म हो जाता है और वो क्रैश कर जाती है. अगर आपको मेरे शो के रिगार्ड्स कोई फीडबैक देना हो तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं. मेरी मेल आईडी है bhambri.r@gmail.com, यानी कि bhambri.r@gmail.com. तो दीजिए इजाजत मुझे यानी कि आपके दोस्त आपके होस्ट भामरी को समेटने की आज का शो. मिलूंगा मैं आपसे अगले हफ्ते ठीक इसी दिन ठीक इसी समय और ठीक इसी इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, और चर्चा करेंगे हम अपने उस शो में किसी और नई दुर्घटना की और नई घटना की. तो नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस.